So good morning everyone. Let's begin with the places in news in geography part, and the first is Namibia. Okay, so Namibia African country है बच्चे, and why it is in news? Because of the heat wave it is facing due to El Nino effect. So El Nino अभी कुछ समय पहले था जिसके कारण यहाँ heat wave हुआ है. That's why Namibia is famous. So when you see this Namibia, you need to remember few things like there is a ocean current over here. What is the ocean current? What is the name of that ocean current? Huh? Ocean current. I'm talking about ocean current, not about desert. So there is Namib desert, but the ocean current is which one? Benguela. Benguela is a cold ocean current. So please remember, wherever there is desert in tropics, you must find ocean current that is of cold in nature. So Benguela current is there, and this is Namibia. So if you want to take down few lines. Namibia is in news because of worst drought and heat wave. Worst drought and heat wave due to El Nino effect. So how El Nino is going to cause heat wave? Is it understandable? So El Nino that results heat wave. El Nino or El Nino responsible for drought, and due to drought, dryness, this will lead to heat wave. What is the meaning of heat wave? So drought का मतलब less than average rainfall हुआ होगा, and you know El Nino is going to have this kind of impact, especially in the western part of the continents. So drought and heat wave. So the meaning of heat wave is that the average high temperature of that very area remain more than 4.5 degree centigrade to 6.5 degree centigrade, and that too for consecutive 5 days. So these 5 days are continuous. It's not like कि आज हुआ कल interruption, परसों interruption हुआ और there is fluctuation. If it is consecutive for 5 days, we call it heat wave, and when it is more than 6.5 degree centigrade for 5 days consecutive, we call it severe heat wave. Severe heat wave. So Namibia is there because of severe drought as well as heat wave. Further, if you see, this country is having a desert over here, and there is ocean current, that is what? Benguela. Benguela ocean current, Benguela current, which is a cold current, and due to this you will find there is a desert, Namib desert and Kalahari desert. Namib desert and Kalahari desert is there. So please mark it important. Namibia, Namibia, then the next is Mexico. Mexico is in news recently also, although this current affair belongs to the month of September 2024. So I'm covering the places in news month wise and important news with it. So Mexico, still it is in news because of this Gulf of Mexico. You know, the name has been changed and it is now Gulf of America. So Mexico, it's a largest Latin American country. What do you mean by Latin America? 3 terms you need to remember: Central America, Middle America and
Latin America. You know what is the meaning of Latin America? What is Central America? Yes, starting from this Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica and Panama. This is what? Belize, Guatemala up to Panama. Entire South America. Okay, starting from Mexico to entire South America. Yes, let me give you the idea. So there is a term Central America. Central America. So you will find the Central American country like Guatemala, Belize, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Panama. These are the Central American country. If you add Mexico, it becomes Middle America. Middle America. Okay. So Mexico plus Central America constitute Middle America, and if you add with Middle America with South America, we call it Latin America. So Mexico is the largest, not largest, third largest country of Latin America after Brazil and Argentina. After Brazil and Argentina, Mexico. Mexico City is the capital, and it is one of the largest agglomeration in the world. In terms of population size, it's a huge agglomeration, Mexico City. So जो टॉप 10 एग्लोमरेशंस हैं उसमें मेक्सिको सिटी का भी नाम आता है बच्चे. सो मेक्सिको. अच्छा, why it was in news? Basically, this Mexico was in news for the first time in entire world that judges can also be elected by the citizen. So no collegian system, just like the elected member, judges are also going to be elected from by the voting process, and that's why it was in news. And what other thing you need to remember, try to see this Yucatan Peninsula, and if you see Yucatan Peninsula, there is a region, let me draw it. So this is Yucatan Peninsula. This is Florida Peninsula. Yucatan Peninsula. Yucatan Peninsula. You'll find Cuba over here. And this is what called as Yucatan Channel. Yucatan Channel. That is the trade route that bring the vessels to United States of America as well as Mexico. You will find Panama Canal over here. Panama Canal. In Panama City, you enter in Atlantic Ocean through Yucatan Channel, and here it is Florida Channel. Florida Channel. And this is what Gulf of Mexico, or now it is called as Gulf of America. Gulf of America. 2-3 things about this Gulf you need to remember. First thing, क्या चीज? Sulfur. Sulfur reserves are there. Sulfide reserve basically. So sulfide reserve, तो आप इसके लिए भी
इसे याद कर सकते हो, सल्फाइड रिजर्व. Gulf of Mexico is also known for that this is the region where no corals are developed, no coral development is taking place because of pollution, turbidity, formation of dead zone, formation of dead zone, lot of transportation and massive river discharge. Massive river discharge. So this is, you should understand. So no coral development is taking place in Gulf of Mexico. और यहीं बगल में आपका क्या है? Caribbean Sea. You will find lot of coral development in Caribbean Sea. Lot of coral development. In Caribbean Sea. Okay. Further, what to remember, there are two river discharge, I usually go for it. One is Mississippi, Missouri. There is New Orleans. And another river is Rio Grande River. So we'll find two rivers. This Rio Grande River is actually making the border between Mexico and United States of America. Okay, so delta of Mississippi and Rio Grande. One thing more, and that is what, there is a ocean current that develops from New Orleans through Florida Channel. It is called as Florida current. You remember that? This is Florida current. It's cold current or warm current, bache? It's warm current. So what is the reason of genesis of Florida current? It is the river water discharge. And this Florida current along with North Equatorial current, isn't it? Antilles current is going to make stream which is called as Gulf Stream. ठीक है, बताया था इसको, याद है आपको? ठीक है. Apart from it, we need to remember this area which is the coastal area of Gulf of America. That is also the part of Lower America, or you can say plain of America or prairies of North America. It is famous for tornadoes. You know tornado? It's a weather event, extreme weather phenomena in which the wind is whirling and rising up with a very high wind speed of 500 to 800 km per hour. It's funnel shape and creating massive thick cloud and thunderstorm along with rainfall. Okay, tornado, they are also called as twisters. So you'll find that this area is having massive tornadoes, means n number of tornadoes are there near the Gulf of Mexico, or yes, dead zone because of agricultural activity and lot of chemical fertilizer discharge. So dead zone आपने पढ़े होंगे, eutrophication, cultural eutrophication and dead zone formation. So it is because of, mainly because of agriculture, because Mexico and North America both are going to be very rich in agriculture. This area is called as corn and cotton belt. ये पूरा का पूरा आपका जो मैक्सिको के आसपास का और नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कॉर्न एंड कॉटन बेल्ट के नाम से जाना जाता है. एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज गोइंग ऑन. Entire prairies of North America is known for the grain basket of the world. Fine. So what I was talking about, more and more tornadoes are being formed. Why? Do you know this? Or shall I explain? Why more tornadoes? Okay, fine. For that we have to make a map.
So make a map over here. So this is North America, and you know that the western part is having Cordillera. Which Cordillera? Rockies Cordillera. What is the meaning of Cordillera? It's a parallel ranges of alpine series. And why it is called as Cordillera? Because of their peculiar shape. They look like the cords of the rope. You have seen the twisted rope, so it look like the twisted rope. That's why it is called as Cordillera. Western Cordillera, that is what Rockies mountain. Here it is Rockies mountain. Different names are there like Coast Range, Cascade Range, Sierra. क्या हुआ? ठंड लग रही है. Sierra. हाँ जुकाम होगा तो फिर दिक्कत हो रही होगी. कोई नहीं बच्चे. So what I am going to discuss is why there are more and more tornadoes. Means world के जो tornado हैं उसके 70% tornado are coming in this lowland of North America. So western part is having Rockies, eastern part is having Appalachian. Okay. Appalachian. Now what happened? You will find one local wind. In the local wind, you have heard about norther. You know norther. So norther is a local wind which is coming from the polar region. It is a cold, dry wind with very high wind speed. This is norther. Basically, this norther is a polar wind when it reaches to Texas. How it reaches to Texas? Because there is no physiographical barrier. पूरे एरिया में फिजियोग्राफिकल बैरियर नहीं है. भारत में भी अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी भी हालत खराब रहती. नॉर्थ अमेरिका में देयर इज नो ओरोग्राफिक बैरियर एंड दिस इज व्हाट लो लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यू आर गोइंग टू हैव अ कोल्ड ड्राई विंड with very high wind speed reaching up to Texas. This polar wind are called as norther. So one kind of wind you have seen over here. Further, Mexico, Gulf of Mexico is very close, and due to the heating effect, what happened? There is a local wind which is coming over here, and it is what? Moisture laden wind. It's a sea breeze. Okay, so sea breeze from Gulf of Mexico containing moisture, and you have a contrasting wind, cold wind, and there is sea breeze, and one more kind of wind you will find which is descending from the Rockies mountain and entering into the plain of North America. इस wind का नाम बताइए जरा. It's a hot dry wind. Hot dry wind. अब तो नाम बता दो. Chinook. Chinook. This is Chinook, snow eater. So you will find three different types of wind and contrasting wind, and it is containing lot of moisture also. Okay. And what about the Coriolis force? This is Tropic of Capricorn, 23.5 degrees. So obviously Coriolis force is high, more. So higher Coriolis force. Higher Coriolis force. And the lowland of North America, there is a homogeneity also. And what happened when three contrasting wind containing moisture is meeting at North America plain, there is a twister formation, very strong twister formation because of high Coriolis force, and you will find this area is called as Tornado Alley. Tornado Alley. This area is called as Tornado Alley of the world. So most of the tornado of the world is actually coming over here because of these contrasting wind. So do remember the contrasting wind, and this is Gulf of Mexico. In Mexico, the tornadoes are called as twister. They are also called as twisters.
Why they are called as twisters? Because they have very high wind speed of 500 to 800 kilometer per hour. This is the wind speed through which the whirl is taking place, and anything and everything which is coming in the path of the tornado is going to be devastated. Okay, because of the very high wind speed. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैक्सिको में ही ट्विस्टर कहते हैं, ये जो बॉर्डर है बच्चे वहां इसे ट्विस्टर ही बुलाते हैं. सो टॉर्नेडो हैज अ डिफरेंट नेम विच कॉल वी विल कॉल ट्विस्टर. ओके, so why it is twister? Because it twists everything. So whatever the diameter of tornado is almost 450 to 500 मीटर, नॉट किलोमीटर. तो उतने एरिया में जो कुछ भी होगा, चाहे वृक्ष हो या फिर घर हो, सबको ये डिवास्टेट करता हुआ चला जाएगा. ठीक है. इट लुक्स फनेल शेप, आपने फाउंडेशन कोर्स में पढ़ा होगा टॉर्नेडो. एंड व्हेन इट इज डेवलपिंग ऑन द वाटर सरफेस, इट लुक्स एज इफ it has sucked the water column and there is a formation of water column. But the water column is largely because of the rainfall. It is not because of the suction effect, isn't it? So this is what tornado, and this area is tornado LI. Why it is? Because of norther sea breeze from Gulf of Mexico and Chinook, that is what? Warm dry wind. Okay, so this is something about this Gulf of Mexico you should remember. Fine. Gulf of Mexico. कुछ लिखना चाहेंगे या चला जाए आगे? आगे चले ना? ठीक है. So let me see the next. Well, it's Jordan. This area is, for n reason, it is in news. So please do take care of Jordan. Jordan is making border with Israel, Saudi Arabia, Iraq, Syria, isn't it? And it is having, is it having coastline? Jordan. Try to see Gulf of Aqaba. Okay, Gulf of Aqaba. And what is it? Dead Sea. Dead Sea. And this part is what? West Bank. West Bank is was part of Jordan. Jordan, Golan Height था उसका. So West Bank was part of Jordan and it was taken by 1967. You know everything, fine. So this is Jordan and here you will find this Gaza Strip. थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे. Gaza Strip. This Gaza Strip is actually part of Egypt. Fine. It was also occupied by Israel, and you will find that Israel is planning a canal that connect Mediterranean through Gaza to Gulf of Aqaba. So this is what Ben Gurion Canal. I have discussed also Ben Gurion Canal. So Jordan, try to see the surrounding country. First thing which you should remember, the surrounding country. Okay. Why it was in news? It was in news because it has eliminated leprosy, eradicated leprosy from the country. That's why it was in news. Fine. And other purpose to remember Jordan is with respect to Israel, Arab-Israel war, as well as the conflict which is going on. So do take care of it. So Jordan, it's a war zone as well as in news because of one good reason, that it has eradicated leprosy from the country. तो लिख सकते हैं आप जॉर्डन. एंड इससे आप जो है कोस्ट लाइन, ये मैंने इसलिए दे दिया है कि आप जो है जब प्रीलिम्स का जल्दी जल्दी वो कर रहे हो ना, तो इससे आप कोस्ट लाइन देख सकें. एंड प्लीज यूज इट इन कलरफुल मैनर ना. इसका वो जेरोक्स वगैरह मत कराना, नहीं आपको ये दिखेगा नहीं. गल्फ ऑफ अकाबा, मेरी बात समझ रहे हो?
तो आप अपने मोबाइल में देख लेना, अगर लैपटॉप हो सबसे अच्छा लैपटॉप है, उस पर जल्दी जल्दी स्क्रॉल करते हुए एक एक बार सारी कंट्री की जो सराउंडिंग्स हैं जरूर देख के जाना, जो भी मैंने आपको दी है, कल भी दिया था कुछ, आज भी। ठीक है बच्चे, सो लेट्स हैव अनदर कंट्री and there is Chagos archipelago. So this is what island in central Indian Ocean. Chagos archipelago. It is island group in central Indian Ocean, located about 1600 kilometer from Cape Comorin. 1600 kilometer from Cape Comorin. Chagos archipelago. And it is what? British Indian Ocean territory. So it was in news, British Indian Ocean territory. Few islands are important. I have already discussed Reunion. You should remember French overseas territory and this Chagos archipelago. क्या चीज बेटे? केप कोमोरिन, कन्याकुमारी। केप कोमोरिन से 1600 किलोमीटर साउथ में है चागोस आर्किपेलागो. So Chagos archipelago. Let's come to this line. Try to see this blue line. So since May 2000, the UN approved withdrawal line for IDF troops known as the blue line has become Israel's de facto border with Lebanon. So लेबनान के साथ जो बॉर्डर है वो ब्लू लाइन है. ठीक है, ब्लू लाइन बॉर्डर विथ लेबनान. Some ports are in news. They are the busiest port of the world. Like Port Shanghai. Can you identify in your atlas? Port Shanghai, Port Singapore. देख रहे हो कहाँ है सिंगापुर? मलक्का स्ट्रेट. रॉटरडैम, पोर्ट रॉटरडैम, बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप. कहाँ पे है भाई? बताया था, मेरे ख्याल से मैंने बताया था, राइन रिवर, नीदरलैंड, है ना. पोर्ट लॉस एंजलिस, पोर्ट हांगकांग, इनको ध्यान में रखिएगा. Yes, this Mount Fusiyama or Mount Fuji or Mount Fuji Shan. It is in news. Why it is in news? हाँ, वॉल्केनिक इरप्शन. इससे अभी कुछ दिन पहले पूरा इरप्शन तो नहीं हुआ था, बट देयर वाज अ इमिशन ऑफ लावा, सम अमाउंट ऑफ मैग्मा एज वेल एज गैसेस. सो देयर वाज अ डिबेट कि इट शुड बी डॉर्मेंट वॉल्केनो और एक्टिव वॉल्केनो. तो ये जैसे ही सुना तो कहा बताता हूं मैं तुम्हें. तो इसने बता दिया कि भाई क्लासिफाइड एज एक्टिव वॉल्केनो माउंट फ्यूजियामा. इट्स अ स्ट्रेटो वॉल्केनो. इज इट ओके? एंड इट इज पार्ट ऑफ सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ fire. Circum-Pacific ring of fire. It is the highest mountain of Japan also. Try to see Sea of Japan. Okay, and also called as East Sea. Such ocean are water bodies which is enclosed by island arc or archipelago with mainland are called as marginal sea. Like South China Sea, Andaman Sea. These are the marginal sea. Sea of Japan, Sea of Okhotsk. These are marginal sea. Papua New Guinea. So Conference of Party 16 on Biodiversity. It was held in Papua New Guinea. Papua New Guinea. It is world's second largest island. Largest island कौन सा है भाई? ग्रीनलैंड.
So Papua New Guinea is the second largest island of the world. Why to remember? Conference of Party 16 on conservation of biodiversity. So you'll find so many type of conference of parties. One is on climate change, UNFCCC, CBD, as well as conference of party also taking place for disaster, natural disaster risk reduction. Okay, so do remember. So Papua New Guinea 16th conference of party on biodiversity. Next one is Scarborough-Shola. Try to see the map of Scarborough-Shola. So this area is what? Disputed territory between Philippines and China. And you will find Paracel Island, Spratly Island over here. These are also the disputed territory. So we are talking about the South China Sea. आप अक्सर इसको नहीं ढूंढ पाते अपने एटलस में, तो स्कारबर्ग शोला ध्यान से देखिएगा. So Philippines ऑक्टोपस हेड के वेस्ट में है बच्चे. द ऑक्टोपस हेड विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ फिलीपींस. ओके, सो स्कारबर्ग शोला, also known in English as the Scarborough Reef, is an oceanic coral atoll that developed on top of seamount into a triangle shape in eastern part of South China Sea. What to remember? It's an atoll. What is atoll? Island surrounded by coral. Yes. Yes, horseshoe shape coral island arrangement is called as atoll. ऐसा सी शेप अरेंजमेंट हो जाए, ढेर सारे कोरल आइलैंड हो जाए, उसको आप अटॉल कहते हो. लार्जेस्ट अटॉल. अच्छा देखो, क्लास में कुछ बच्चों ने कहा है कि सर आप क्लास में पूछा मत करिए, पढ़ाया करिए. हाँ, मतलब मेरा ये मानना होता है कि जब मैं ये सवाल पूछता हूं तो आपको ये पता चलता है कि ये नहीं तैयार है, तो घर जाके आप तैयार करते. मतलब कुछ बच्चे सिखाना चाहते हैं कैसे पढ़ाना चाहिए, सीखने नहीं आए हैं. तो why I am asking it, it may be a one liner. Which is the largest atoll? Kwajalein. Kwajalein atoll is the largest atoll in the world. So there are many atolls like Kwajalein, Pikini Island. You can have this Scarborough Shola also. So these are the atolls. ठीक है बच्चे. और क्लास में सवाल पूछना और वो ना आना बड़ा ही नॉर्मल सा है. आपको नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये तो अपना अखाड़ा है ना, यहाँ तो हार जाना आपका कोई मैटर नहीं करता. यहां से आप जाओ और वो कमियां आप पहचानो और उसे तैयार कर लो. क्या पता वही क्वेश्चन हो तो आपका मूड खराब हो जाए क्लास में कि अरे सर ने क्वेश्चन क्यों पूछ दिया. ऐसा नहीं है बच्चे. हम लोगों ने देखा है इतने सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, उसके लिए जरूरी होता है आप तैयार रहें, अटेंटिव रहें. पता नहीं कौन सा सवाल पूछ दे, है ना. सो दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दीज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू नो इसे भी तैयार कर लेना चाहिए, है ना. और कभी कभी ऐसा ऐसे बातचीत वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है. और ऐसा होता है, आप भी अब डिस्कशन कर रहे हो किसी टॉपिक पे एंड यू गेट द सेम क्वेश्चन, सो लगता है कि फ्रूटफुल हो गया डिस्कशन. सो दैट इज द पर्पस. एनीवेज, सो दिस स्कारबर्ग शोला, स्प्रैटली आइलैंड, परासेल, और एक नातुना आइलैंड है बच्चे इंडोनेशिया का, वो इसमें नहीं दिख रहा, बट yesterday I have discussed. This is the bone of contention in South China Sea. Okay, Scarborough Shola is what? It's a atoll. Do remember this. It is located some 220 km west of Philippines island of Luzon. This is Luzon. It is the largest atoll in the South China Sea, submerged at high tide with few rocks above sea level. The shoal is the source of ongoing and so far unsolved dispute between the People's Republic of China and Philippines, with both countries claiming that the shoal lies within their territory and saying they have exclusive right to access the waters. Okay, so 9 degree dash line, ये जो देख रहे हो ना, ये डैश डैश ऐसे ही नहीं खींचा गया है, चाइना का है 9 degree dash line. इधर आए तो हाँ, चाइना क्लेम करता है कि मेरी जो 200 नॉटिकल माइल टेरिटरी के अंदर है.
फिलीपींस कहता है भाई हम अपना 200 नॉटिकल माइल कहाँ से नापे, कहता है हमको नहीं पता। तो फिर उसके बाद क्वाड, क्वाड यू नो क्वाड, ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। So this is what the small continents scattered in Pacific Ocean, and you have understood it since मीन्स फाउंडेशन क्लास में जब आपको मैं इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ा रहा होता हूँ तभी इसके बारे में चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बेंड है इंटरनेशनल डेट लाइन में, ईस्टवर्ड बेंड इंक्लूडिंग ऑल द आइलैंड कंट्री। अर्लियर दे वेर द यूरोपियन कॉलोनीज, फाइन, they were European colonies, and that's why in order to keep them in similar or same time zone, international date line have got the bend. You have idea of bends in international date line or not? So one bend to keep the Alaska and yes Chukchi, there is two island, Greater Diomede and Lesser Diomede Island, and Greater Diomede belongs to Russia, Lesser Diomede belongs to USA. In order to separate them, there is a bend over there. Then come to the Aleutian Island. Aleutian Island arc partially belongs to Russia. The western part belongs to Russia, eastern part belongs to United States of America. So you'll find there is another bend towards west. And then third bend is in near tropics and including all these island country. These island country can be divided into a group like Polynesia, Micronesia and Melanesia. So when you see the Polynesia, you will find very tiny island scattered in the Pacific Ocean. So you will find tiny island scattered like French Polynesia, like Cook's Island, Samoa is there, Tuvalu is there, Kiribati is there. These all are what? The Polynesia. Poly means many, Nesia means island. So many, what you can say, island over there, ocean bodies over there, fine. And then there is Micronesia. So try to see, there are tiny island like Marina Island, Marshall Island, Federation States of Micronesia, Palau, Guam. These are the tiny island country. तो छोटे आइलैंड कंट्री हैं इसलिए इनको माइक्रोनेशिया कहा गया. Many Micronesia are there, hence it is called as Polynesia. Then try to see Melanesia, like you will find Papua New Guinea, part of Melanesia. Indonesia is also part of Melanesia. Solomon Island, New Caledonia, Vanuatu, Fiji, these are the Melanesia. Why it is called as Melanesia? What is the reason behind it? It is called as Melanesia because of melanin. Yes, the people who are residing over there, they have more melanin synthesis in their skin. क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे sun rays are vertical, and in order to survive there we require melanin. तो वहां के लोग क्या हैं? काले हैं. हाँ, देखो सब हंस रहे हैं. इंडिया में देखो काला गोरा इतना मतलब चर्चा. अच्छा, सूरज की रोशनी बढ़ेगी ना तो गोरे लोग परेशान हो जाएंगे. काले कैन सर्वाइव. और हंसो मत, इंडिया को भी ब्लैक ही कहा जाता है सर. हम में नहीं, आप भी ब्राउन हो. चलो ये देखो इधर, बेमतलब का ओवर कॉन्फिडेंस है ये. अंग्रेज आपको भी ब्लैक कहते हैं, ब्राउन कहते हैं, ब्राउन. लड़कियां ना और भी ज्यादा गोरे काले का चक्कर. बच्चे आप भी ब्राउन हो. नहीं, तुमने कहा कि सर कैंसर, स्किन कैंसर हम में ज्यादा होगा, ईश्वर ना करे, इस तरह की बातें नहीं बोलते. हाँ, ये बात सही है कि whites are more susceptible for what you can say skin cancer because of ultraviolet rays. So Micronesia, Polynesia and Melanesia. So this is the Melanesia. You can find here Papua New Guinea. Then you have this यहाँ पे थोड़ी है. It is in, yes, it is in the subduction zone, but this is not the subduction zone. It is what? North to this Micronesia. Fine.
So Solomon Island, these are the coverage. You just go and see the names of different country. It was in news. Next is in news, which is Armenia. Armenia is in news, और यहाँ पे जो भी है वो बड़ा ही खतरनाक हो जाता है. किस लिए? उसके बॉर्डर्स के लिए बच्चे ना. सो आर्मेनिया, so try to see the surrounding country. Surrounding country, Armenia. Why it is in news? It was in news because it became the 1/4 member of 104, मीन्स 104 मेंबर हो गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. सो आर्मेनिया बिकम द 104th member of international solar alliance, and it is surrounded by Azerbaijan, Georgia, Turkey. Azerbaijan, Georgia and Turkey. Armenia, it's a landlocked country. ध्यान से देखिएगा, it's a landlocked country. South to Caucasus. Try to see Caucasus also. Caucasus mountain range. Just south to Caucasus. Caucasus mountain देखो, physical map. Caucasus mountain is what? Same alpine mountain. Okay. So Armenia. After Armenia, next one is Bolivia. Bolivia. क्या कहा आपने? Is it making border with? Yes, it is making border with. No, it is making basically border with Azerbaijan. Azerbaijan क्या है ना, वो आपके अर्मेनिया के साउथ वेस्ट में भी है. There is a territory of Azerbaijan which is in the southwest also. Try to see. It is only bordered by Georgia and Azerbaijan. देख पा रहे हैं? बहुत छोटा दिख रहा होगा आपके एटलस में. वो ईरान लग रहा है, लेकिन जो बीच में ईरान और जॉर्जिया के बीच का स्ट्रेच है वो अजरबैजान का है. अरे आर्मेनिया और ईरान के बीच का स्ट्रेच. ओके, क्लियर रहिएगा. इट इज बॉर्डर्ड बाय अजरबैजान from east as well as south, west, and by Georgia, and in the west you will find Turkey.
चलिए, नेक्स्ट वन इज बोलीविया। बोलीविया किस बात के लिए याद रखेंगे? एक लेक दिखाई पड़ रही होगी, देख पा रहे हैं क्या? लेक टीटीकाका, देख रहे हैं? पेरू और बोलीविया के बीच में एक लेक है, पहुंच गए जी? लेक टीटीकाका, इट इज द लार्जेस्ट नेविगेबल लेक, सॉरी हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लिख लीजिए लेक टीटीकाका। ठीक है, ये न्यूज में क्यों थी? न्यूज में थी बच्चे, बोलीविया देयर इज अ largest salt pan where you will find lot of lithium deposit, Salar de Uyuni. Salar de Uyuni is a place, it's a salt pan, basically चिली, पेरू और बोलीविया का एक ट्राइंगल है जिसको लिथियम ट्राइंगल कहते हैं। yes, and that is what containing lot of lithium deposit. Salar de Uyuni from Bolivia, Salar de Arizaro of Peru, and Salar de Atacama of Chile. So this is what the lithium triangle, and Bolivia is in the news because of Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, world's largest salt flat or salt pan. लिख लो SALAR, Salar de Uyuni. Salar de Uyuni. It is in Bolivia. Okay. Salar de Uyuni, Lake Titicaca. Lake Titicaca. Try to see this lithium triangle. Lithium triangle is an intersection of Chile, Bolivia. Sorry, Chile, Bolivia, not Peru. It's Argentina. गलत हो गया था, मैं पेरू बोल गया था ना. It is what? The Chile, Bolivia and Argentina. So Salar de Arizaro is of Argentina. अगर लिख लिया है तो सही कर लीजिएगा. Salar de Uyuni, it is of Bolivia. Salar de Atacama, it is in Chile, and Salar de Arizaro, it is in Argentina. This is called as lithium triangle, and it contains almost 45% of known global lithium reserve of the world. It's 45%. आप 56 बोले तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था. हाँ, ये ऑथेंटिक है, इसको फॉलो कीजिएगा. ठीक है, इट इज 45%. चले आगे. सो लिथियम ट्राइंगल, Salar de Uyuni in Bolivia, Salar de Atacama in Chile, and Salar de Arizaro. So why it was in news? Because of Salar de Uyuni. Out of these three, Salar de Uyuni is the largest. Is it okay? Next one is Moldova. It is also become the part of International Solar Alliance. That's why it was in news. Moldova is a landlocked country. Try to see where it is situated. So landlocked, you will find Ukraine, Romania. Okay, landlocked country lying in the northeastern corner of Balkan region of Europe. Its capital city is Chisinau. Located in the south central part of the country, Moldova is bounded by Ukraine to the northeast and south, and by Romania to the west. The bulk of republic lie between the great meandering Prut and Dniester river. Prut and Dniester rivers are there. Moldova lie in the east of great arc of Carpathian mountain. Carpathian mountain, again it is what? Alpine mountain. Moldova has well developed network of river and stream all draining south to the Black Sea. इधर आ रही हैं बच्चे. Dniester, the rapidly flowing main artery, is navigable almost throughout the
Republic, the river becomes swollen by spring snow melt from the Carpathian and by heavy summer rain. It does not freeze over during warmer winters. The other smaller main artery, the Prut, is a tributary of Danube River, which it joins at the extreme southern tip of the country. So what to remember? नीस्टर जरूर याद रखिएगा, ब्लैक सी, माल्डोवा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द सराउंडिंग कंट्री. तो सब यहीं से सवाल बना दें कि माल्डोवा रिसेंटली ज्वाइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इज सराउंडेड बाय 3-4 कंट्री. दे आर गोइंग टू गिव एंड यू कैन सॉल्व. सो मैप को जरूर देख के जाइएगा एक बार. वनुवातु कहाँ पे बच्चे? अभी हम लोग देख ही रहे थे, मेलानेशिया का पार्ट है. So Vanuatu, a massive earthquake of magnitude 7.3 struck Vanuatu, an island nation in the South Pacific, consisting of chain of 13 principal and many smaller islands located about 500 miles west to Fiji and Australia. So this is what the Melanesia part, Vanuatu. अच्छा, Tuvalu is also in news. क्यों? उसका एक आइलैंड है जो कि सबमर्ज हो गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसलिए याद रखना तुवालू. और यहां से सवाल बन सकते हैं, छोटी छोटी कंट्री है ना, तो अक्सर हाँ उसके लिए भी सही कह रहे हो. Amazon rainforest, again you must put attention on Amazon rainforest. Okay, this Amazon river is covering almost 40% area of Brazil, this Amazon basin. तो अगर देखा जाए वॉल्यूम वाइज तो इट इज द लार्जेस्ट रिवर Amazon, and this stretch of forest is the dense forest of the world. Almost you can say 14% of the total forest area of the world. You'll find this Amazon, which is no more there. Now it is just 6% left over. And this Amazon forest is also called as selvas. You know, एक ये confusion रहता है आपको, इसलिए थोड़ा सा clear हो जाइएगा. Selvas. So Amazon forest is also called as selvas. Fine. ये केवल Amazon forest को कहा गया है. Amazon forest, also called as selvas. And you know, selvas is a term which is used for tropical grassland. Tropical grassland, like savanna grassland, उसको भी सेल्वास कहते हैं. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अमेजन फॉरेस्ट को भी सेल्वास कहते हैं. अमेजन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ, एंड इट इज द लार्जेस्ट terrestrial stretch of green carbon. ग्रीन कार्बन क्या होता है बच्चे? कार्बन सिंक, जो ग्रीन कलर के हों पेड़ पौधे. तो देर आर डिफरेंट नेम लाइक ग्रीन कार्बन, टील कार्बन, एक नया टर्म आया है जो आपके करंट अफेयर में भी है, टील कार्बन. देन वी हैव ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, ग्रे कार्बन. सो एन नंबर ऑफ कार्बन आर देयर. ब्लू कार्बन. सो क्या है ये पता है ना आपको? व्हाट इज ब्लू कार्बन? नहीं पता? Black carbon, that is what the shoot when you go for burning of biomass. So lot of shoots are coming out, stubble burning se. So shoots are what? Carbon which is coming from the burning of biomass. Brown carbon, whatever the fossil fuel burning you are going to have is what called as brown carbon, incomplete combustion of fossil fuel. So these black carbon and brown carbon, they are notorious, they are having negative impact. But what about blue carbon? So marine ecosystem going to fix the carbon is called as blue carbon, and it is the best carbon sink, है ना? Mangroves, blue carbon. And what about green carbon?
plants. They undergo photosynthesis and they are going to curve this extra carbon dioxide into chemical compound that is glucose. तो वो कार्बन को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट्स व्हाई दे आर सिंक. So the largest terrestrial stretch of green carbon, this is what? Amazon forest. So Amazon rainforest, large tropical rainforest occupying the drainage basin of Amazon river and its tributary in the northern South America and covering an area of almost 2,300,000 square mile, 2 lakh, sorry, 23 lakh square kilometer, square mile and then kilometer. देख लेना यार. Comprising about 40% of Brazil total area. Okay, 40% of Brazil total area. It is bounded by Guinea Highland in the north, Andes Mountain in the west, and Brazilian Central Plateau in the south, and Atlantic Ocean to the east. Amazon cover a huge area. हाँ, क्यों? अच्छा, लेट मी चेक. थोड़ा मुझे भी ज्यादा लग रहा है, एक बार देख लो गूगल करके. वो एरिया देखना जो अमेजन फॉरेस्ट जहां तक था, पूरा बेसिन कितना है? 40% एरिया ऑफ ब्राजील है. बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं. एनीवे, बाद में चेक कर लेना. आ जाओ, ये याद रखो, 40% एरिया ऑफ ब्राजील is what? Lying in the Amazon basin. Amazon cover a huge area, 6.7 million square kilometer. हाँ, उससे ऊपर है. हाँ तो ठीक है, ठीक है. Of South America, nearly 60% of the rainforest in Brazil, while the rest shared among 8 other countries, that is Bolivia. Please mark it important. अमेजन फॉरेस्ट और कहाँ है? बोलीविया में आपको हो सकता है ना दिखे, बट याद रखिएगा, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला एंड फ्रेंच गुयाना एंड ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस. फ्रेंच गुयाना, ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस. और क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे? यही है कोरू इन फ्रेंच गुयाना. कोरू इज अ स्पेस पोर्ट ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. अक्सर आपने सुना होगा, फ्रेंच गुयाना से हमारे सैटेलाइट्स भी लॉन्च होते हैं, है ना? कोरू, फ्रेंच गुयाना. दिस इज व्हाट? ओवरसीज टेरिटरी ऑफ फ्रांस. अमेजन फॉरेस्ट. सो अमेजन फॉरेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज lungs of the earth, lungs of the earth, Amazon forest. And recently you will find that the stretch has been reduced to just 6% of whatever there. 14% was there earlier, and now it is just 6% because of lot of plantation agriculture drive which is going on in these countries. So next one is what? Point Nemo. Point Nemo is the distant point from each and every country. पैसिफिक ओशन में ही मिलेगा. सबसे दूर का पॉइंट है बच्चे, जो कि कहाँ है? Try to see. Here it is South America and Wellington is there. न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है. वहां से 2980 किलोमीटर. It's not to remember ना. Point Nemo, what is it? It's a distant point from all the country on the earth. तो यहाँ अगर आप पहुंच गए तो मदद आने में भी बहुत समय लगेगा. This is the point Nemo. Okay. Point Nemo लिखना चाहे लिख लें. Point Nemo लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं. 2 women officer of Indian Navy sailing in the vessel INS Tarni crossed the Point Nemo, the remotest location on the earth.
Point Nemo, also known as oceanic pole of inaccessibility, holds the distinction of being the farthest point from any landmass on Earth. Okay, this remote point lies in the South Pacific Ocean and it is named after Captain Nemo, the sailor from Jules Verne's famous novel 20,000 Leagues Under the Sea. Situated approximately 2688 km from the nearest landmass, this isolated point is famous for its extreme remoteness. तो पढ़ लीजिएगा इसको, Point Nemo. Next one is Kurdistan. This is warring zone. Kurdistan, broadly defined geographic region, traditionally inhabited mainly by Kurds. It consists of an extensive plateau and mountain areas spread over large part of what are now Turkey, northern Iraq, western Iran, and a smaller part of Syria and Armenia. So try to see the what you can say extension. So it is extended in how many countries? Turkey is there, Armenia is there, Syria is there, Iraq is there, and Iran is there. Fine. So this is what Kurdistan, Iraq's Kurdish autonomous region. Next one is Mount Taranaki. It's a stratovolcano in New Zealand. So Mount Taranaki, try to see, this is the northern island of New Zealand. New Zealand देख पा रहे हैं आप, है ना? So Mount Taranaki, it is what? The stratovolcano was recognized as a legal person in New Zealand. इसको legal person के रूप में recognize किया गया है. पागल भारत में ही नहीं होते. लीगल पर्सन है भाई. Mount Taranaki. New Zealand is part of Circum-Pacific Ring of Fire. Yes or no? South Pacific Ocean, the southernmost part of Polynesia, New Zealand is a remote land, one of the last sizable territory suitable for habitation to be populated and settled, and lies more than 1,000 miles southeast of Australia and its nearest neighbor. The country comprises of two islands, north and south, and a number of small islands, some of them hundreds of miles from the main group. The capital city is Wellington and largest urban area is Auckland. Largest urban agglomeration of New Zealand is Auckland. Both are located on North Island. New Zealand administers the South Pacific Island group of Tokelau and claim a section of Antarctic continent. New and Cook Island are self-governing state in free association with New Zealand. This is what New Zealand. So you will find this North Island and South Island. Try to identify this Cook Strait. Cook Strait, okay, and Mount Taranaki. Next one is Darien Gap. ये कराया था शायद मैंने. Darien Gap. So आप देख पा रहे हो कहाँ पहुँच गए हो आप? Equatorial region में पहुँचे हो, कोलंबिया, इक्वाडोर, and this is part of Central American country. And there is a area which is called as Darien Gap. Darien Gap. It's a narrow isthmus and this area is having lot of dense forest, equatorial dense forest. तो dense forest होने से आप अगर चाहो कि नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका बाई रोड चले जाओ तो it is not possible because there is lot of swamp, dense forest and fast running rivers and flora as well as fauna. Apart from it, लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं? जो इलीगल हैं वो चले जाते हैं क्योंकि उनको पता है जन्नत की हकीकत. तो आओ देखो क्या है बच्चे. द डेरियन गैप इज अ नैरो isthmus that straddles the border between Panama and Colombia and serve as the only land bridge connecting North and South America. Despite its mountainous terrain, swamps, dangerous animal and dense jungle, the Darien Gap has become the primary land route for migrant, most of whom are heading to the United States and they are illegal. Now it was in the news for being a major route for illegal migration to USA. Darien Gap.
Why it is containing so much of dense forest and swamp, fast moving river? Yes, because of equatorial climate. Equatorial climate की खास बात क्या होती है बच्चे? You will tell. What is the primary characteristic of equatorial climate? Forest क्यों है? वही तो पूछ रहे हैं. Dense forest, yes, it is, but because of rainfall. So you will find more than 250 centimeter rainfall, convectional rainfall, 4 pm rainfall. तो ये सब कुछ बताइए आप. ठीक है, तो इतने रेनफॉल में क्या होते हैं? रेन फॉरेस्ट होंगे और क्या होंगे. Next one is Baltic nation. Try to see the Baltic Sea, and these are the Baltic nation. So you'll find Estonia, Latvia, Lithuania, and maybe possible कि they can put question from here. North Sea से पूछ चुके हैं, तो Baltic Sea से भी पूछ सकते हैं. Gulf of Finland आप देख रहे हैं, Baltic Sea, then Strait, Irben Strait, and Gulf of Riga. Please remember it. Then we have the boundary, and the boundary is shared by Russia, Poland, Belarus. Russia इधर भी आ जाएगा, है ना? So Russia, Poland, and Belarus is sharing boundary with Baltic state. So Baltic nation. क्यों न्यूज में था? क्योंकि इन्होंने अपनी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को क्या किया था? डिस्कनेक्ट किया था रशिया से. So they were in news. Baltic states have disconnected their electricity system from Russia's power grid. Baltic states, northeastern region of Europe containing country Estonia, Latvia, Lithuania on eastern shore of Baltic Sea. Baltic states are bounded on the west and north by Baltic Sea, which gives the region its name. Okay, on the east by Russia, on the southeast by Belarus, and on the southwest by Poland and enclave of Russia. It is surrounded. The underlying geology is sandstone, shale, and limestone, evidenced by hilly upland and alternate with low-lying plain, and bear mute testimony to impact of glacial era. Mute testimony of impact of glacial era, that means glaciated landforms are there. You will find fjord coast over there, isn't it? Glaciated lakes over there. Next one is Net Jerim corridor. नेट जरीम कॉरिडोर बच्चे क्या है? ये चेक पॉइंट है नेट जरीम कॉरिडोर का. है कहाँ? गाजा. ठीक है, नेट जरीम कॉरिडोर, दिस इज द चेक पॉइंट, और इज पार्ट ऑफ इजराइल हमास सीज फायर एग्रीमेंट. इजरायली फोर्सेस हैव विथड्रॉन फ्रॉम नेट जरीम कॉरिडोर. ठीक है, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. नेट जरीम कॉरिडोर, अ मिलिट्री जोन कटिंग ऑफ द नॉर्थ ऑफ द गाजा स्ट्रिप फ्रॉम द साउथ. So this is south part of Gaza Strip. Here it is north part of Gaza Strip, and Net Jerim corridor. This is north and south. Net Jerim corridor is cutting off the Gaza Strip. So do remember this Net Jerim corridor. It can be asked. So be prepared for it. There are certain canal which is often in news, and you should know that these canal. So I have just compiled all these canal. So you all have this idea Suez and Panama. Apart from it, let's have another canal, that is what? Great Canal. It is the oldest and longest man-made navigable canal in the world. Great Canal. ठीक है? And reaching a length of 1794 kilometer, the construction of the canal took about 2000 years. Work began in 500 BC. More than 6 million people are involved. The Beijing Hangzhou Canal connect the main waterway of the country, the Yangtze and Yellow He River or Wang He River, capturing several lakes. It runs along the channel of Seshui Big River in the central part through the Hangzhou Canal. So it is in China. Great Canal. Next one is Corinth Canal, the narrowest canal in the world. People have thought about its construction long ago in 7th century BC, but it was opened only in 1893. Hungarian architect Tir and Jester worked on the project for 12 years, and 2,500 people were involved. Connecting the Corinthian Gulf of Ionian Sea and Saronic Gulf of Aegean Sea, the canal passes through the narrow isthmus of Corinth and separate the Peloponnese
from mainland of Greece. Corinth Canal. So these two canals are old canal. Then Mittelland Canal, the longest canal in Germany. एक बार पढ़िएगा. Volga Don Canal. Volga Don Canal link the Russian river Volga and Don, providing an important waterway through Azov and Caspian Sea to the main oceanic network. The canal passes through the reservoir. Then Rhine-Main-Danube Canal. So Rhine-Main-Danube Canal, most important sea route, allows ship to move freely along the river between the North Black Sea and Atlantic Ocean. Okay, the Rhine-Main-Danube Canal can handle barges with a capacity of almost 2500 ton, equipped with 16 locks, 11 of which are located in Rhine. What is the meaning of locks? So when such canal are made in the river, so there are many compartments, you can understand it's a locks. So when the bigger ships are coming over there, in each compartment water table get raised up so that the ship can be navigated. So these are the locks. Then Kiel Canal. Okay, एक बार पढ़ लीजिएगा. Erie Canal. Fine, Erie Canal. There is a Great Lake and there is one more canal, Soo Canal. Soo Canal भी लिख देता हूं मैं. इसको लिख लेना, इस पे नहीं है. Soo Canal. Soo Canal connect Superior to Huron. So from Superior to Huron, Michigan to नीचे है साउथ में. So from Superior to Huron, there is a Soo Canal that connects Superior Lake to Huron Lake, and it's what, navigable, and lot of navigation is going on along this canal. So all the canal of the world, ओल्ड वाली भी और नई वाली भी, और दो और कैनाल बनाई बताई है आपको, एक कारा और दूसरी बेन ग्यूरियन, याद रखिएगा. लेट्स हैव सम डेजर्ट्स एंड यू नो सहारा डेजर्ट, डिटेल लिखा हुआ है बच्चे, आप देख लेना. सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्री हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सहारा डेजर्ट पे सवाल नहीं आएगा, वो नहीं पूछेगा द लार्जेस्ट डेजर्ट, वो पूछेगा कौन कौन सी कंट्री हैं. तो देख लीजिए, बिल्कुल कायदे से लिखा हुआ है. सूडान है कि नहीं जी? ठीक है. सूडान, इजिप्ट, लीबिया, चाड, नाइजर, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मारूतानिया एंड माली. Okay, so this is what the Saharan country. Sahara is bordered by, means west में ये है, Red Sea है, Mediterranean, everything is given. Please go through it once. Then there is Libyan desert. Try to see Libyan desert. It is part of Sudan, part of Egypt and part of Libya. Okay, northeastern portion of Sahara extending from Libya through southwest of Egypt and extreme northwest of Sudan. So Libyan desert, अब यही सवाल आ जाए किन किन देशों में है, तो आपको समझना जरूरी है. इजिप्ट में भी है, सूडान का छोटा सा पार्ट भी है, लीबिया में तो है ही, ठीक है. तो इसको देख लीजिएगा. इसीलिए मैंने दिया है कि दे आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक डिस्ट्रीब्यूशन. माउंटेन भी पूछ रहे हैं कि एंडीज माउंटेन कौन कौन सी कंट्रीज में है, यूराल माउंटेन शेयर्ड बाई कंट्रीज, तो वो भी जानना जरूरी है. तो मैं नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए. ये भी इसी तरह बनाया है मैंने कि ताकि आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है. देन नेक्स्ट वन इज कालाहारी डेजर्ट. ट्राई टू सी अगेन कालाहारी. मोस्ट पार्ट इज इन बोत्सवाना बट इट इज इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो एज वेल एज नामीबिया, ठीक है. कालाहारी डेजर्ट, नामीबिया, बोत्सवाना, मेजर पार्ट इज इन बोत्सवाना. Okay, so you will find this Kalahari desert, large basin like plain of interior plateau of southern Africa. It occupies almost all Botswana, the eastern third of Namibia, and the northern most part of northern Cape province in South Africa. In the southwest, it merges with the Namib, the coastal desert of Namibia. Okay, नामीब डेजर्ट इसी के जस्ट बगल में है. देख लो कहाँ है, ये रहा नामीब, ठीक है बच्चे. सो नामीब डेजर्ट along the coast. Why this Namib desert? I have discussed already. ध्यान रखिएगा. Then next will be the Great Basin of North America. Great Basin, distinctive natural feature of Western North America that is equally divided into rugged north-south trending mountain block and broad intervening valleys. Great Basin is a desert area. You will find less rainfall because of what?
continentality effect. So Great Basin, you will find another desert like Colorado Desert, fine, Colorado Desert, Californian Desert, Mexican Desert, and Chihuahua Desert. So all are present over here. So Colorado Desert के ही ये part है. Sonoran Desert, okay. So these deserts are present in North America. कौन सी ocean current है यहाँ बच्चे? हाँ, कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट है, ठीक है। एक चीज और बताया था यहाँ पे, कैलिफोर्निया तो इधर आ जाती है, लेकिन उधर कौन सी जा रही है? अलास्का। कोल्ड और वार्म? वार्म करंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज आटाकामा, यू नो द फॉर्मेशन, ट्राई टू सी द कंट्री, इट इज most of it is in Chile, it is also spread in Argentina, Bolivia and Peru, okay। और इसके बाद का जो डेजर्ट है पेरू में, दैट इज कॉल्ड एज पेरुवियन डेजर्ट और सेचुरा डेजर्ट, ठीक है ना, सेचुरा डेजर्ट। सेचुरा डेजर्ट, पेरुवियन डेजर्ट, Atacama is also referred as Chilean desert, or the driest place is present in Atacama, less than 5 centimeter rainfall. And which current is there? Peruvian current. एक और नाम है इसका Humboldt current, ठीक। Let's come to the Australian desert, Great Victoria. Try to see, you will find Great Sandy, Gibson, Simpson, ठीक है, and there are many other, इतने मेजर डेजर्ट आप याद रखें। फिर आ जाइए बच्चे अरेबियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट सऊदी अरेबिया, and it is extended to United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Iraq, Jordan, Yemen, Oman. Is it okay? And you will find Al-Rub al-Khali. Al-Rub al-Khali is the largest sand stretch on the globe. इसको sand of sea कहते हैं बच्चे, रूब al-Khali यहाँ पे है। You will find रूब al-Khali, देखो अपने एटलस में, largest sandy desert, largest sandy desert, and it is called as sea of sand, Al-Rub al-Khali or Rub al-Khali। देख लिया? Shall we move? गोबी डेजर्ट कहाँ है भाई? गोबी डेजर्ट देख रहे हो तो टकला मकान भी देख लो, है ना, गोबी डेजर्ट एंड टकला मकान, this is the Takla Makane area. Then Karakum Desert, where it is situated? Karakum Desert, great sandy region in Central Asia. It occupies about 70% of the area of Turkmenistan. Another smaller desert in Kazakhstan near the Aral Sea is called Aral Karakum. Aral Sea is also in news. ठीक है, किस लिए न्यूज है? ड्राई तो हुआ था पहले की बात है, इस साल किस लिए है? गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान की इनिशिएटिव के कारण नदर्न पार्ट ऑफ अरल सी फिर से रिजुविनेट हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज, फाइन। सो ट्राई टू सी अरल सी, ये पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, अरल सी की बाउंड्री हुआ करती थी, अब कन्फाइंड, अगर पिछले साल का मैप देखोगे तो ये एरिया केवल अरल सी का पानी था, नाउ इट इज हैविंग वाटर ओवर हियर बिकॉज ऑफ कजाकिस्तान initiative, and that Aral Sea is rejuvenating. So Karakum Desert, is it okay? Then Kavir Desert. Kavir Desert is great salt desert in north central Iran, located in basin southeast of Elbrus mountain. Kabir, okay,
approximately 240 mile, 390 kilometer wide. The desert is distinguished by its salt crust caused by the almost rainless climate and intense surface evaporation, lying over treacherous quicksand-like salt marshes that are almost uninhabited. Quicksands काफी सारे मिलेंगे आपको कबीर डेजर्ट में. क्विकसैंड जानते हैं ना, जस्ट लाइक मार्शेस द सैंड, अगर आप गए तो आप बहुत जल्दी से नीचे चले जाते हैं. सो क्विकसैंड. नेक्स्ट वन इज सीरियन डेजर्ट. ट्राई टू सी सीरिया. Syrian desert, arid wasteland, although this is part of Arabian desert also, but yes, Syrian desert नाम है. तो कहाँ कहाँ है आप देख पा रहे हैं. Syrian desert. Next one is Thar desert. ये तो पता नहीं कहाँ है, देख लीजिएगा. Dead Sea बच्चे. So this is Jordan. Jordan का ये हो गया वेस्ट बैंक. इसे वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं बताओ. ये रहा डेड सी, है ना. सो दिस इज डेड सी एंड दिस इज द ईस्ट बैंक ऑफ डेड सी एंड हियर इट इज द वेस्ट बैंक ऑफ डेड सी. फाइन. सो डू रिमेंबर डेड सी. एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट डेड सी? द सैलिनिटी. सैलिनिटी कितनी है बच्चे? 238 parts per thousand. सेकेंड मोस्ट सलाइन लेक. और सबसे सलाइन कौन है? लेक वॉन ऑफ टर्की. लेक वॉन 338 पार्ट्स पर थाउजेंड. लेक वॉन. और तीसरे नंबर की है ग्रेट सॉल्ट लेक. 220 parts per thousand. This is the salinity. So Great Lake, Great Salt Lake. Here it is Dead Sea. United States of America, USA, है ना. ठीक है. एक बच्चा मिला मुझे, कहा कोलकाता में है सर. हम क्या अच्छा, अब बदल लो. There is also a Salt Lake ना. Salt Lake City is there. Fine. Confused था. Anyway. Let's come Lake Baikal. We have discussed it. Lake Baikal. What is? Yes, 20% water of world. Deepest lake and quite oldest also. Lake Baikal, lake located in the southern part of eastern Siberia within the Republic of Buryatia and Irkutsk Oblast, province of Russia. It is the oldest existing freshwater lake. Oldest पे भी mark कर लेना. Oldest existing freshwater lake. Okay, as well as the deepest continental body of water having a maximum depth of 5,315 feet. So this is what? Lake Baikal. Where it is situated? Try to see with respect to the Pacific Ocean, North Korea, South Korea, Mongolia and all. Is it okay? Next one is Lake Tanganyika, second largest of the lake of Eastern Africa. Eastern Africa की ये दूसरी लंबी बड़ी लेक है विक्टोरिया के बाद, टंगानिका. What is important? कौन कौन सी कंट्री में है पहले देखो. It forms the boundary between Tanzania and Democratic Republic of Congo and part of the boundary between Burundi and Democratic Republic of Congo, as well as part of the boundary between Tanzania and Zambia. So these are the country. Tanganyika, Lake Tanganyika, and it is a Rift Valley lake or not? Yes, it is a Rift Valley lake. Rift Valley lake. नेक्स्ट वन इज लेक विक्टोरिया. इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं. किगाली देख रहे हो ना, रवांडा किगाली. किगाली अमेंडमेंट क्या है बताओ. क्या वो तो ठीक है, अमेंडमेंट क्या हुआ. देखो बात समझो, आप पढ़ जरूर लेते हो, एक लाइन से काम नहीं चलेगा. आज जाके देख लेना किगाली अमेंडमेंट क्या है. आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या था, अब क्या है. आईएनडीसी इंडिया का क्या था पहले,
और पंचामृत के बाद क्या हो गया है. सो देयर इज अ कंपैरेटिव स्टडी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना. तो केवल वन लाइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट. किगाली अमेंडमेंट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज. सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे. दैट्स वाई आज जाके पढ़ लीजिएगा लेक विक्टोरिया के बारे में. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ अफ्रीका and second largest freshwater lake of world area wise. Lake Victoria, African Great Lake by area, the world's largest tropical lake and the second largest freshwater body in the world. It has a surface area this much, average depth 40 meter, maximum depth 80 meter, volume 2760 kilometer cube. Yes, and basin area this much. Fine. The shoreline is shared by Kenya, Uganda and Tanzania, which extend to Rwanda and Burundi also. कभी कभी क्या होता है, बारिश जहां हो रही है और river, try to see the river. So basin is bigger and the surface of the lake, surface area of lake is smaller. So basin area as well as surface area. So please take care of basin area. So ये जो green color से दिखाया गया है, that is what basin एरिया, उसको कहते हैं थाला क्षेत्र, जहां से पानी आ रहा हो, जो जो रिवर लेके आ रही हो. और इसको क्या कहेंगे बच्चे, लेक का सरफेस एरिया. ऑब्वियसली बढ़ जाता होगा रेनी सीजन में, घट जाता होगा समर सीजन, है ना. अरल सी, इट इज इन न्यूज. सो व्हाई इट इज इन न्यूज? अरल सी वंस लार्ज सॉल्ट वाटर लेक. ये देखो जरा अरल सी कोस्ट लाइन इन 2014. 2014 की कोस्ट लाइन कैसी है? Try to see. लैंड सबमर्ज्ड इन 1960. ये पूरा का पूरा एरिया लैंड सबमर्ज हुआ था, मतलब होता था 1960 में. और 1960 की कोस्ट लाइन ये है बच्चे. एंड इंटरनेशनल बाउंड्री छोड़ दो, अभी जो कोस्ट लाइन है वो देखो. सो दिस इज व्हाट द कोस्ट लाइन इन 2014. बट बिकॉज ऑफ द कजाकिस्तान इनिशिएटिव, नाउ दिस अरल सी इज रिजुविनेटिंग. ठीक है. तो अब इधर का ये जो नदन पार्ट ऑफ अरल सी गेट रिजुविनेटेड और इसका एरिया बढ़ा है. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. सो प्लीज गो थ्रू इट. एंड हियर इट इज द माउंटेन रेंजेस, डिफरेंट माउंटेन रेंजेस एंड द डिटेल्स हैज बीन गिवन. कौन कौन से कंट्री में है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा. पढ़ूं या आप पढ़ लेंगे? नोट्स ऑलरेडी है. क्या कह रहे हो बताओ? कवर कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा. वन स्टॉप सॉल्यूशन इसीलिए दिया है. रॉकी माउंटेन लेंथ वगैरह देख लेना, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट, कौन कौन सी कंट्री है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना. अब ये कंट्री हैं तो कौन सी नहीं है ये भी ध्यान रख लेना. ठीक है. क्योंकि बहुत कम कंट्रीज है वहां पे, तो क्वेश्चन बन सकता है. द हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, ओजोस डेल सेलेडो, बताया था आपको. एक्टिव वॉल्केनो है बच्चे चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे. लिथियम ट्रायंगल अभी देखा हमने. 3 countries that part of lithium triangle, Argentina, Bolivia and Chile. Rocky Mountain, Rockies extended approximately 4800 किलोमीटर. इसकी लेंथ कितनी है बच्चे? एंडीज की more than 7000 किलोमीटर. So it is Rockies approximately 4800 kilometer from British Columbia in Canada to New Mexico in USA. ठीक है. Mount Elbert 4401 meter located in Colorado, USA is the highest peak in the Rockies mountain. अब Mount McKinley कहाँ है बच्चे? अलास्का रेंज का पार्ट है. Mount McKinley, that is the highest peak of North America. It is in अलास्का रेंज. ठीक है. सो अलास्का रेंज, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में ये सारे आ जाते हैं. रॉकीज भी आता है, अलास्का भी आता है, अलास्का रेंज, कास्केड रेंज, कोस्ट रेंज, सिएरा मैड्री, ओरिएंटल, सिएरा मैड्री, ऑक्सीडेंटल, ये सारे फिर कॉर्डिलेरा में आते हैं. रॉकीज माउंटेन कहाँ से कहाँ है बच्चे? कोलंबिया, सॉरी दिस इज ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा टू न्यू मैक्सिको ऑफ यूएसए. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ मिलेगा भाई? ऑस्ट्रेलिया में. लेंथ कितनी? 3500 किलोमीटर, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. माउंट कोशियुस्को इज द हाईएस्ट पीक.
Atlas mountain, it is in Africa, running approximately 2500 kilometer through Morocco, Algeria, Tunisia. They are young fold mountain. They separate the Sahara desert from Atlantic and Mediterranean coastline. Mount Tobkal is the highest peak. Mount Tobkal is the highest peak. And do remember, which is the highest peak of Africa? माउंट किलीमंजारो. 3-4 बार तो बता ही चुका हूं. हाँ हाँ, और ये माउंट तोबकाल है. एटलस माउंटेन, एटलस देख रहे हो ना? एटलस, अच्छा वो, हाँ. नाउ दिस एटलस माउंटेन, देन यूरल माउंटेन. ट्राई टू सी दिस यूरल माउंटेन विच इज मेकिंग बॉर्डर बिटवीन, आप जानते हो, स्कैंडिनेवियन माउंटेन. देख रहे हो? सो व्हेन आई डिस्कस द माउंटेन इन द क्लास इन फाउंडेशन कोर्स, वी गो फॉर division of these mountain, classification of mountain, different types of mountain on the basis of orogeny, and different types of mountain on the basis of period of orogeny. So Scandinavian mountain कब बने थे? So there are Precambrian orogeny, there are Hercynian, Caledonian and Alpine orogeny. 4 orogeny are there. The oldest one is what? Precambrian orogeny. Precambrian orogeny में बने थे फेनो स्कैंडिनेविया और लॉरेशियन माउंटेन, और भारत के अरावली और धारवाड़ बने थे. ठीक है. हर्सीनियन, कैलिडोनियन, एल्पाइन में ये सारे बने थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ाते समय. मैंने बताया था ना, रॉकीज एंडीज, आल्प्स से लेकर हिमालय. तो याद रखना बच्चे. सो यू विल फाइंड स्कैंडिनेवियन, यूराल, दिस इज ईस्ट यूरोपियन प्लेन. हियर यू फाइंड कार्पेथियन, आल्प्स, पायरेनीज, एपेनाइन, यू विल फाइंड बाल्कन्स. आपको याद होगा कार्स टोपोग्राफी बताई थी. सो दिस रीजन एड्रियाटिक सी का जो ईस्टर्न कोस्ट है, that is what known for karst region and karst topography. This area is known for karst region. So do remember, here it is Caucasus mountain. Okay, so Ural mountain, then Appalachian mountain, it is in North America. So old mountain में ये भी आते हैं बच्चे. Their orogeny is almost Caledonian. So you'll find running parallel to east coast of North America. Appalachian stretch over 2400 kilometer in USA and Canada. Northern part of Appalachian is very rich in mineral deposit. St. Petersburg का नाम सुना होगा. Coal deposit of North America is actually located over there. Altai mountain extending over 2000 kilometer in Altai mountain are located in the intersection of Russia, Mongolia, China and Kazakhstan. Okay. Scandinavian mountain, also known as Scandies, these range in northern Europe extending through the Norway, Sweden and small part of the Finland. It stretches approximately 1700 km along the western side of Scandinavian peninsula. याद है ना Scandinavian peninsula? 2 बार तो हमने QEP में बताया था, 2 या 3 बार. एक बताया था जब नॉर्वेजियन करंट बताया होगा तब बताया था. एक बताया होगा जब माउंटेन डिपॉजिट्स, कोल डिपॉजिट्स एंड similar mountain range and similar coast continental drift theory, तब स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला आया होगा. सो याद रखना. और एक बताया होगा तब जब बताया होगा वाई नॉर्वे इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ मिडनाइट सन. तो मुझे तो याद हो गया, तुम्हें याद हुआ कि नहीं? मिडनाइट सन, कंट्री ऑफ मिडनाइट सन बताया था ना. सो किस टॉपिक में बताया था? सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्सेस. फाइन. स्कैंडिनेवियन माउंटेन, it stretches for approximately 1700 km along the western side of Scandinavian peninsula. So ये कुछ माउंटेन है. इसके बाद आल्प्स देख लो. ये आपके सेंट्रल एशियन एज वेल एज यूरोपियन माउंटेन जो अल्पाइन माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं, जैसे हिमालय, अराकन, फिर आपका ये हो गया हिंदुकुश, सुलेमान, किरथार, जैग्रोस, then you have Elbrus, Lesser Caucasus, Greater Caucasus, then you have Taurus, and after Taurus we have this Carpathian, like Pennines, Alps, ये आपने अभी देखे. ठीक है. So these are the mountain ranges. So these things for today's class, please revise and then let's come to the, अभी time तो है, थोड़ा environment भी देख लिया जाए.
अब इन्वायरमेंट में मुझे लग रहा है स्पीशीज हो चुकी है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह हो चुके हैं, तो क्या बचा है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी आई ट्राइड कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखी जाएं। देखते हैं आपको कैसा लगता है। ये अंटार्कटिक ट्रीटी बता दिया गया है, अंटार्कटिक ट्रीटी, सो नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट है बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। अंटार्कटिक ट्रीटी। अच्छा, इसका इतिहास ये है कि 1959 में इसे साइन किया गया। तो शुरू से बताएं, लिख लो, 2-4 लाइन लिखो फटाफट। अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइन in 1959 in 1959 by 12 country in Washington. Antarctic Treaty in Washington, and it came in force in 1961. This treaty was mainly based on the peaceful research, mainly ऐसे लिखना है कि the objective of the treaty is peaceful research in Antarctica. The key provisions are as follow. The key provisions are as follow. First, Antarctica shall be used peacefully and for peaceful purpose. Prohibit nuclear test in Antarctica. As well as radioactive waste dumping, and any kind of military deployment. This treaty prohibit any kind of military deployment. India has been consultative partner since 1983. So, India's 1983. So, India's research stations on Antarctica, and I am very proud to say that मेरे चाचा जी उसके पार्ट रहे हैं। हाँ, he is in IMD, तो he was the part of that जो कंटिजेंट गया था। वो हम लोग के बचपन में वो ये कहानियां बताते थे कि वहाँ किस तरह की सिचुएशन है, कैसे हम लोग खाना खाते हैं, एक दूसरे का बर्थडे वगैरह कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो एक वहाँ जो
कन्फाइंड एरिया बना था, उसको गर्म करने के लिए केरोसिन ऑयल का यूज होता है. So it is very cold, so in order to keep the people over there for research purpose, उसको गर्म रखा जाता है. बाहर जाने पे क्या करना होता है. So all these things are what we heard as a story, bedtime story. तो पहला दक्षिण गंगोत्री, first research station was Dakshin Gangotri. It was established in 1983 only. It is the first research station. And currently 1983 83 में ही बना था, और बनाने के लिए 82 में लोग गए थे, तो उसके पार्ट थे. ठीक है. एंड ही रिमेन देयर, इवेंट देयर ट्वाइस इन 1988 ऑल्सो. तो 82 एंड 88 दोनों में वो गए थे. करंटली देयर इज मैत्री, जो 1989 में बना है बच्चे. मैत्री भारती 2012 में बना है. एंड मैत्री 2 जिसके लिए इंडिया एग्री हुआ है, 46th अंटार्कटिक ट्रीटी मीटिंग, ATCM, 46 ATCM held in India, concluded in India. That's why it is in news. ठीक है. India have also enacted Antarctic Treaty Commitment Act in 2022. लेजिस्लेशन भी हमारे पास है. अच्छा, अभी रिसेंटली जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, उसे किस इंस्टीट्यूशन ने किया ऑर्गेनाइज, वो जानिए. पहले लिख लीजिए, 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ATCM, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ATCM, concluded in India these were hosted by which ministry is involved. जरा सोच के बताओ, सोचो फिर लिखना तो याद रहेगा. क्या लग रहा है? अंटार्कटिक ट्रीटी, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नोट करो, हॉस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च. अब ये नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च क्या है बच्चे? ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है. लिख लीजिए, इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट about the cryosphere. Established in 1998. क्वेश्चन क्या हो सकता है? करंट बेस्ड क्वेश्चन है. अंटार्कटिक ट्रीटी सभी लोग पढ़े होंगे, इस इंस्टीट्यूशन को छूट गया होगा, यहीं से सवाल पूछ देगा. रिसेंटली कंक्लूडेड अंटार्कटिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. समझ गए? And he will give this National Center for Polar and Ocean Research Institution. Fine. Climate Promise Initiative कवर किया था, नोट कर लीजिए. Climate Promise Initiative
It is an initiative to support developing country on their climate action plan execution. On their climate action plan execution. Recently, Climate Promise 2025 unveiled by, अब देखो यहां पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, unveiled by Climate Promise Initiative 2025 unveiled by A. UNFCCC, B. UNEPC, UNDP, and D. UNGA. क्या लगता है? हाँ, UNDP, UNFCCC, लगता क्या है ये बताओ, होगा क्या वो तो मैं बताऊंगा। UNDP लग रहा है आपको? तो सही है, इट्स UNDP, इनिशिएटिव ऑफ UNDP। सो लिख लीजिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 aim to align next generation of developing country on NDC enhancement and implementation, on NDC या INDC, इसके बारे में कुछ अंदाजा? यस, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन दोनों एक ही हैं। पहले INDC यूज होता था, अब NDC यूज होता है। तो कह रहे हैं कि NDC को बढ़ाने का, कि और टारगेट बढ़ाइए। भारत का कितना है NDC टारगेट बच्चे? 32 तो 35%, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट पंचामृत में 45%, हाँ, दैट इज व्हाट द कार्बन इंटेंसिटी, रिड्यूस्ड इन कार्बन इंटेंसिटी। सो NDC बढ़ाने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कुछ आप करते हैं उसके लिए हम सहयोग करेंगे। दैट इज व्हाट प्रॉमिस, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव। ठीक है बच्चे, आई थिंक कि आपने ये किया होगा, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, पॉलिसी इनिशिएटिव दोनों बहुत क्लोज है ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 लिख लीजिए, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव it is related with climate finance 2024, it is an independent, not profit, not for profit organization with deep expertise, in finance and policy.
So CPI is a non-profit organization. It has produced its report in 2024. लिख लीजिए. It has produced its report in Conference of Party 29 जो था. It has produced its report in 2024 under UNFCCC COP 29. UNFCCC Conference of Party 29. According to the report, अब जो चीजें हैं वो important हैं. According to the report, the climate flow का मतलब हो गया the money which is allocated for curbing the climate change. The climate flow are likely to have surpassed 1.5 trillion in 2023. Likely to have surpassed 1.5 trillion in 2023 because of, क्या कारण बना इसका? Because of innovation in renewable energy. क्लाइमेट फाइनेंस क्यों करते हैं बच्चे? पहले ये समझिए, फिर इस रिपोर्ट को समझिएगा. क्लाइमेट फाइनेंस इसलिए करते हैं कि आप कुछ ऐसा इनोवेशन करें जिससे कार्बन इमिशन कम हो सके. आप डेवलपिंग कंट्री हैं, आपके पास पैसे नहीं, हम दे रहे हैं, या हमने जो बनाया है उसको आप अपने यहाँ यूज करिए. सो देयर आर मेनी कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म एज वेल एज ज्वाइंट डिक्लेरेशन. बहुत सारा आपने पढ़ा होगा ना, 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं. हाँ हाँ, सेरू एरू इज देयर एंड मैं भूल रहा हूं. तो कहने का मतलब है कि दिस climate financing is because to curb this climate change, and it is the initiative of developed country to help the developing country. अब developing country को जो पैसे देने हैं उसका लेखा जोखा ये CPI देख रही है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन CPI का कहना है उसकी रिपोर्ट का कि जो खर्च हो रहे थे, जो आप $100 बिलियन पर ईयर की बात कर रहे थे, वो सरपास कर चुका है कितना? 1.5 ट्रिलियन. इसका मतलब अरेंजमेंट और करना होगा आपको, फाइनेंस अगर करना है तो. और ये क्यों बढ़ा, उसका रीजन है कि देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. तो क्या लिखा था, स्टेटमेंट क्या था आपका? Innovation in renewable energy, innovation in renewable energy sector, as well as low carbon transportation system. Underline कर लेना, low carbon transportation system. And second reason is fossil fuel subsidy is still on increase. Increase. There is a institution which is in news and it seems very important, and that is National Information System for Climate and Environment Studies. Any idea? So please note down National Information System for Climate and Environment Studies. Program.
National Information System for Climate and Environmental Studies program. So it's not institution, it's a program conceptualized in 2012, operated by, अब ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिख लो, इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, and Department of Space along with other concerned ministry. ठीक है, प्रोग्राम क्या है बच्चे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम is generation and dissemination of long-term essential climatic data derived from India, derived from Indian and other observation satellites, important for playing role in mitigation and adaptation. Mitigation and adaptation, ये क्या मतलब है भाई? Mitigation, adaptation. So mitigation to stop the climate change, try to stop the climate change, but if not, then what we will do? So we must be adapted to it. तो दोनों काम करने के लिए ये कॉन्सेप्ट इसरो का, और कंसर्न मिनिस्ट्री इसलिए कहा बच्चे कि इफ द impact is felt on agriculture, so Ministry of Agriculture is involved. If the impacts or data is giving something regarding the water resource, तो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी कि नहीं? पावर होगा, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, सो कंसर्न मिनिस्ट्रीज आर आल्सो इन्वॉल्व्ड. सो कलेक्टिंग डेटा फॉर what you can say long term impact, so that we can mitigate and adapt accordingly. Fine. So this is what national National Information System for Climate and Environment Study. So recently it is in news because it has invited so many researchers from India as abroad to come and do some research with the program. Fine. एक और है बच्चे, Million Youth Action Challenge. It was in news. Million Youth Action Challenge. तो क्या है ये Million Youth Action Challenge? So it is an initiative promoted by UN Climate Change Learning Partnership, UN Climate Change Learning Partnership. ये भी एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है बच्चे, 36 पार्टीज हैं, उसके बाद में बता देता हूँ. UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, और इसमें एम क्या है बच्चे? 18 से लेकर के
30 साल तक के लोगों को एनकरेज करना है टू टेक कॉन्क्रीट एक्शन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर. सो मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज is aiming to encourage and connect 1 million youth. 1 million youth. एज बहुत ध्यान से दीजिएगा, यहीं से स्टेटमेंट ट्विस्ट होंगे. 1 million youth aged 10 to 30, not 18, 10 to 30, 10 to 30 तो क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या हो गया? एज 10 to 30 to take concrete action for sustainable future and to promote 4 sustainable development goals. SDG कितने गोल हैं बच्चे? 16, 17 हैं. 17 goals are there. Out of those 4 sustainable goals, SDG कौन कौन से गोल हैं बच्चे? SDG 6, that is clean water and sanitation. SDG 6 कैटेगोरिकली लिख लीजिएगा, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिससे सीधे सवाल बन सकते हैं और ये छिपे हुए टॉपिक हैं बच्चे. इट इज नॉट वेल टॉक्ड, दैट्स वाई ये छिपे हैं, जल्दी पहुंच नहीं रहे, और यहाँ से सवाल अगर बनेंगे तो गलत हो सकते हैं, इसलिए आप उसके लिख लीजिए. कौन कौन से गोल हैं, प्लीज टिक डाउन. SDG 6 क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. SDG 12 that is responsible consumption and production. SDG 13 that is climate action, and SDG 15 life on land. लाइफ ऑन लैंड. समझ रहे होंगे ना सारे इनिशिएटिव्स क्या हैं? ठीक है. अब आ जाइए यूएन क्लाइमेट चेंज लर्न्स क्या है. सो यूएन क्लाइमेट चेंज लर्न, नोट में लिख लीजिएगा, इज एन इनिशिएटिव ऑफ (36) multilateral organizations. 36 मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका पर्पस क्या है बच्चे, इस इनिशिएटिव से समझिए. सो इफ यू आर एडिंग 1 million यूथ ऑफ एज ग्रुप 10 to 30, that means you are creating human resource for what? Combating climate change and achieving the sustainable development goal. So the purpose is to create a skill base for achieving the purpose, because the work is what? Bigger work, and you require a great team. तो लिख लीजिए क्या लिखा आपने, 36 multilateral organization. The objective of this initiative is to help the country by building the knowledge and skill, by building the knowledge and skill they need, by building the knowledge and skill they need to cope up with climate change, to cope up with climate change and to achieve sustainable goal.
एक और मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में कन्वर्ट करना. इट्स एन इनिशिएटिव एंड इट इज इन न्यूज. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथेनॉल प्लांट कन्वर्जन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन पुणे, महाराष्ट्र. दैट्स व्हाई दिस वाज इन न्यूज. छोटा सा न्यूज है. कार्बन डाइऑक्साइड मेथेनॉल कन्वर्जन प्लांट. CO2 टू मेथेनॉल. क्यों ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये सुन लो. सो कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर एयर से ले लें, तो इफ वी टेक इट फ्रॉम एयर and we convert it into methanol, so can we reduce this carbon dioxide? If we are doing so and we are using this methanol for, you can say, in various uses, and energy use is also there. LPG के साथ blend करके हम methanol को जला सकते हैं और हम इसे use में ला सकते हैं. So this is what good news for us. क्या लग रहा है? मतलब जब भी मैं क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी के टॉपिक्स को पढ़ता हूँ, देखो तरीका बता दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सवाल बनेगा कहाँ से. उसको सोचने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या कुछ ऐसा इनोवेटिव है जो कि इनोवेशन है जिसको बहुत ध्यान देना चाहिए, और बहुत छोटी सी न्यूज़ हो, वो यूपीएससी वाले भी देख रहे होते हैं. सो अब जैसे ही मेथेनॉल की बात चलेगी तो मेथेनॉल के यूजेस की बात चलेगी. If you are sequestering this carbon dioxide, there is one news that पुणे में ये फैक्ट्री लगा दी गई जो मेथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे एयर से लेके कन्वर्ट कर सकती है. तो मेथेनॉल के यूजेस को कम कर सकते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ मींस मीटियोर टाइप ऑफ, कि अचानक से रोशनी दिखाई पड़ी, बड़ा अच्छा हो सकता है, इसको किया जा सकता है, तो हो सकता है यहाँ से सवाल बन जाए. दैट्स वाई आई एम पुटिंग सो मच स्ट्रेस, क्योंकि वो सवाल बड़े वाले जो सभी चिल्ला रहे होते हैं उस पर बहुत कम पूछते हैं. वैसे छोटी छोटी चीजों पे सवाल पूछ लेते हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं पढ़ते समय. तो लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथेनॉल कन्वर्जन pilot plant has been proposed, not established, has been proposed in Pune, Maharashtra. Has been proposed in Pune, Maharashtra. It is one of the indigenous carbon capture and utilization technology the plant with a capacity of 1.4 ton per day is being implemented under PPP model with support of PPP, public private partnership model, with support of Department of Science and Technology. ठीक है, पहले तो जानो कि मेथेनॉल कन्वर्जन हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड. उत्तर है हाँ, इफ हाइड्रोजिनेशन इज डन. हाइड्रोजिनेशन का मतलब है बच्चे एडिंग हाइड्रोजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. If you go for hydrogenation, you can add extra hydrogen to carbon dioxide. It will be converted into methanol as well as dimethyl ether. Dimethyl ether is the derivative of methanol. Chemistry वाले अगर आप हैं आप लोग आप तो जानते होंगे. So dimethyl ether, which is a derivative of ethanol, and hydrogenation of carbon dioxide can lead to formation of ethanol. तो एथेनॉल बनाया जा सकता है, पहली चीज. दूसरी चीज, एथेनॉल के यूजेस क्या हो सकते हैं?
है ना। मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल के तो यूजेस हैं, मेथेनॉल की बात हो रही है। तो मेथेनॉल के भी यूजेस हैं, आप एलपीजी के साथ उसे ब्लेंड कर सकते हैं, हाँ फ्यूल यूज कर सकते हैं, एलपीजी के साथ ब्लेंड करके यू कैन यूज इट। तो लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथेनॉल कन्वर्जन can be possible by hydrogenation technique। मेथेनॉल बोल रहा हूं मैं बार बार, अगर इथेनॉल बोल दे रहा हूं गलती से तो मेरी गलती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड मेथेनॉल कन्वर्जन कैन बी पॉसिबल बाय हाइड्रोजनेशन टेक्निक। Methanol is known as wood alcohol. It can replace petrol, diesel in transport sector, energy sector, and can partially replace LPG, kerosene, and wood charcoal. Bureau of Indian Energy Standard has notified blending of 20% dimethyl ether, 20% dimethyl ether, ether with LPG, 20% blending with dimethyl ether with LPG. Dimethyl ether is a derivative, डेरिवेटिव का मतलब होता है बनाया जा सकता है बच्चे, डेरिवेटिव ऑफ मेथेनॉल, डेरिवेटिव ऑफ मेथेनॉल, डाइमेथाइल ईथर। अब ये मजेदार जुगाड़ लग रहा है कि नहीं आपको? तो नीति आयोग कह रहा है कि पूरे कोयले को हम अगर मेथेनॉल में बदल दें तो अच्छा नहीं रहेगा, कोयले को बदल दें, सॉलिड वेस्ट जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है उसे हम बदल सकते हैं थ्रू हाइड्रोजनेशन, बिकॉज दे ऑल आर द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. So if you burn coal, you will produce carbon dioxide. If you burn solid waste, you will produce carbon dioxide. So why not we capture this carbon dioxide after burning of solid waste as well as coal and we convert it into methanol. Storage का भी दिक्कत नहीं रहेगा. मेरी बात समझें? Methanol, it's liquid and methane is a gas. गैस को स्टोर करना इज मुश्किल, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस कैन कैच फायर. मेथेनॉल के साथ ऐसा नहीं है, हमें दिखाई पड़ेगा कि हाँ ये मेथेनॉल भरा है. मेथेन वी कांट सी, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, these are the natural gas, we are not able to see them. हाँ बिल्कुल, अब देखें कनेक्ट करने की बात है. हाँ अरे तो जैकपॉट लग जाएगा ना. बट द थिंग इज कि ये इकोनॉमिकली फिजिबल कितना है इस पे काम करना होगा ना. So this is what innovation, it's a new innovation and we can have this kind of sequestration if we are able to do it. आपको क्या लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही मिल जाएगा आपको क्या फैक्ट्री से या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा. यू हैव टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू सिक्वेस्टर द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सो दैट इज व्हाट अ डिफिकल्ट टास्क एंड this will be economically feasible or not, these things has to be there in future research, part of future research. लेकिन नीति आयोग ने क्या कहा कि चलो इसे करते हैं. लिख लो, नीति आयोग मेथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, और ये मेंस का भी इंपॉर्टेंट यही मार्क कर लेना, ये मेंस में भी एक क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, क्योंकि इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस मेथेनॉल.
So Niti Aayog methanol economy program is aimed at converting leftover coal reserve and municipal solid waste into methanol. अब देखो, इस न्यूज को आपको फॉलो करना है. मे बी इट इज इन योजना एंड कुरुक्षेत्र, द न्यूज विल बी देयर, और इट इज इन द हिंदू, द न्यूज विल बी देयर. यू हैव टू कंपाइल एंड ट्रेस इट टिल योर मेंस एग्जामिनेशन. तो ये एक दिन का काम नहीं है. अगर कुछ भी इससे संबंधित न्यूज होगी तो आपको ध्यान में रखना होगा, यार कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मेथनॉल क्या चल रहा है इसके बारे में. अब ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, है ना. ठीक है. एक न्यूज और थी बच्चे, और इट वाज रिलेटेड विथ कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म. इसको सुना है क्या है कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म? ईयू का कार्बन टैक्स लगाना, सिंपल. कि ईयू ने ऐसी वो सारी चीजें जिससे क्या हो सकती हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो सकता है, उसको टैक्स करना. ठीक है. तो वो एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकती है, कुछ भी विच इज व्हाट रिलेटेड विद. सो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म it is European Union policy to impose carbon tax on certain product from the countries, underline, from the countries with less stringent climate policy, with less stringent climate policy. जैसे स्टील, स्टील किसी ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करने पे टैक्स लगेगा जहां पे क्लाइमेट नॉर्म्स बड़े ही ढीले ढाले हैं. इट इज नॉट इन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड नॉर्म्स, वो पेरिस अकॉर्ड के खिलाफ हो, या वहां पे उस पर बहुत ज्यादा काम ना रहा हो, तो वहां से जो कुछ भी प्रोडक्ट आ रहे होंगे उसको टैक्स करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कार्बन टैक्स. अब ये न्यूज में क्यों है? ये तो बहुत पहले की बात है. न्यूज में इसलिए है कि ब्रिक कंट्री ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी बताया और इसको अपोज किया. सो लिख लीजिए, इट वाज इन न्यूज because of Kazan Declaration, Kazan, Kazan Declaration, adopted by BRICS and rejected carbon border adjustment mechanism, calling it discriminatory. अच्छा, CABM इंप्लीमेंट कब हुआ था? 2023. It was implemented by European Union in 2023. तो याद रखिएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, कब शुरू हुआ, कब इन, एंड 2026 से इसे फुल फ्लेज्ड में इन्फोर्स करना था बाय ऑल कंट्री, with respect to all the country. By 2026 it was meant for all out enforceable. एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है बच्चे, टील कार्बन. टील कलर आप लोग को पता होगा,
teal carbon. What is it? It is a news. एक नया कार्बन apart from black carbon, brown carbon, green carbon, blue carbon. There is another carbon that is steel carbon. It is in news. Any idea? अच्छा, इन कार्बन के बारे में आइडिया. ब्लैक कार्बन, दो लाइन लिख लो फटाफट. ब्लैक कार्बन, कार्बन रिलीज थ्रू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल and biomass. These are basically the soot release during incomplete combustion. Incomplete combustion of fossil fuel and biomass. ग्रीन कार्बन किसे कहते हैं बच्चे? Yes, carbon is stored through photosynthesis by plants. तो क्या बचा? ग्रीन कार्बन. ब्राउन कार्बन किसे कहते हैं? इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल. पर्पल कार्बन, पर्पल कार्बन इंडस्ट्रियल इमिशन. And what is this? Blue carbon. क्या हुआ बेटे? हाँ, मतलब you are talking about the answer. Blue carbon, marine ecosystem, mangrove. They are going to store carbon dioxide. They are also doing photosynthesis, isn't it? And they are sequestering carbon dioxide, which is called as blue carbon. It is called as blue carbon. ठीक है बच्चे? अच्छा, this is the best sink of carbon dioxide. Why it is the best sink? कोई अंदाजा? ठीक. उसके बाद क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट. ओशन में कहां हो गया परमाफ्रॉस्ट? बेटे परमाफ्रॉस्ट इज अंडर द फ्रोजन ग्राउंड. दैट इज डिफरेंट. इट इज पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर. आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोस्फीयर, मरीन इकोसिस्टम या फिर मैंग्रोव. व्हाई दे आर टर्म्ड एज बेस्ट कार्बन सिंक? ये आपको जानना चाहिए. हाँ, एल्गी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, इवन व्हेल, all the marine organism. So whatever the biomass present in the marine organism, after death it sink inside, whether it is mangrove also, and once it is getting sink inside, the rate of decomposition is slowest. Will you appreciate this? भाई आप ही बताओ ना, आप गार्गलिंग करते हो, गरारा करते हो, गला खराब होता है, क्यों करते हो? उससे कुछ आराम हो जाता है? ये ऐसी कोरी बकवास है या कुछ कारण है उसका? होता है ना.
अच्छा, गार्गलिंग करते हो तो यू आर यूजिंग जस्ट वाटर और यू आर कीपिंग समथिंग salt? Okay, fine. So what happened? What is the impact of this salt? It causes reverse osmosis, and whatever the bacteria inside your throat is going to be died because of reverse osmosis. मारे जाते हैं bacteria because of the salinity. That means in salinity will bacteria survive? नहीं, बहुत कम बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, वेरी लेस बैक्टीरिया. तो मान लो ये रहा आपका मैंग्रोव. दिस इज अ मैंग्रोव प्लांट, इट्स अ ट्री, फाइन. एंड आफ्टर स्टोरिंग लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इसे चाहिए होगा कि नहीं? इट विल डू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इट विल एक्यूमुलेट लॉट ऑफ बायोमास. अब क्या होगा बच्चे? मैंग्रोव है कहां? कौन सा पानी है ये? saline or brackish water. Now this mangrove have completed its life and it is dead now. मर गया ये मैंग्रोव. कहां मरेगा? कहां रहेगा बच्चे ये मैंग्रोव? It is under water. This is the story of all marine organism, especially the phytoplankton. वो भी क्या करते हैं बच्चे? फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन किन्हें कहते हैं आप? जो ऐसे ऊपर तैर रहे होते हैं ना. दे ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. इन्होंने CO2 ले लिया कहां से? एटमॉस्फेयर, और किस में बदल दिया? ग्लूकोज में. और फिर क्या हो गए? इन्होंने अपनी लाइफ खत्म की एंड दे सेटल डाउन and they are coming onto the ground. Now these are the biomass accumulated. ये है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है. अब यहां कहोगे डिकम्पोजिशन करने के लिए there is a process of decomposition. पढ़ा है ना? Biogeochemical cycle and decomposition. So microbes are responsible for this decomposition, and the microbes are very fearful from the saline water. Saline water is not conducive for them, so very less decomposition will be there. तो यहां पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में कौन रह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. It will remain here. Why? Because the rate of decomposition, इसे वापस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदलना is very very slow. That's why the blue carbon sequester carbon dioxide for very long duration. It keep the carbon dioxide out of carbon cycle for very long duration. That's why they are the best sink of carbon dioxide. Understood? And this is why there is a geoengineering technique. बात चलिए तो बता देता हूं. That is called as ocean fertilization. You have heard about this? Ocean fertilization. क्या करते हैं बच्चे? You just add nutrient like ferrous sulfate, copper sulfate, zinc sulfide. These are the nutrients which you are adding into the ocean water, and there is luxuriant growth of phytoplankton. तो अब luxuriant growth of phytoplankton will lead to what? More and more carbon dioxide sequestration, and then after the death they will sinking beneath. और वहां बैक्टीरिया से कहोगे जा भाई डिकम्पोजिशन कर दो, बैक्टीरिया क्या कहेगा? भाई जान न देनी, कार्बन डाइऑक्साइड को रहने दो आउट ऑफ कार्बन साइकिल. वी आर नॉट गोइंग टू डाई. Is it okay? That's why it is the blue carbon. Blue carbon is the best sink. Best sink. Now sink this information. Spelling दूसरी है. Sink this information, this concept with carbon, sorry, ocean fertilization technique. अब आसानी से समझ में आएगा कि why this technique is very much promising. Is it okay? Now come to the teal carbon. Teal carbon है बच्चे wetland. It is related with wetland, swamp, bog, fen,
which is having mangroves, means tidal forest is also there. Tidal forest, you can add teal carbon, tidal forest. Mainly it is what, terrestrial wetland, not the coastal wetland. तो टील कार्बन कहा जाता है carbon stored in non-tidal freshwater wetland. Non-tidal, please correct. It's not tidal forest. Non-tidal freshwater wetland, which is what, carbon sequestered in vegetation, microbial biomass in a wetland. Acha, why this is in news? This is in news because first teal carbon assessment and study was undertaken first time in India in which protection area network? कहाँ पे बच्चे? पहली बार भारत में टील कार्बन की स्टडी हुई। यहाँ के एक वेटलैंड, कैसा वेटलैंड चाहिए, टाइडल या टेरेस्ट्रियल? यस, फ्रेश वाटर, केवलादेव घाना। हाँ, नोट कर लीजिए, केवलादेव घाना, टील कार्बन study, first steel carbon study undertaken at Kevladev National Park. And what is steel carbon? You know, and that's why it is important. बड़ा छोटा सा न्यूज था, ध्यान रखिएगा। केवलादेव घाना या केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? भरतपुर, राजस्थान, ठीक है। और टील कार्बन क्या है? अब चूंकि करंट बेस्ड है बच्चे, तो बाकी के कार्बन भी आने चाहिए। दैट्स व्हाई आई पुट सो मच एफर्ट। एंड डू रिमेंबर द ब्लू कार्बन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लू? द कलर कोडिंग इज बिकॉज ऑफ आज ब्लू है, पानी पानी, दैट्स इट, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो आज यहीं रुकते हैं, कल इसके आगे। हाँ बेटा, क्या? कल कर लेते हैं, आज वैसे ही टाइम हो गया। एकमैन ट्रांसपोर्टेशन ना, और भी वालेस लाइन भी सीखनी है, वालेस लाइन, ठीक है। थैंक यू। कल